Today's guest is Parth Chheda, an alumnus of Srimati Sulochana Devi Singhania School and currently a student researcher at the Indian Institute of Science Education and Research, Pune, pursuing the prestigious BSMS dual degree. Parth's journey from school science exhibitions to academic research in one of India's top institutes is one that many of us aspire to follow. Passionate, driven, and full of insight, Parth brings a grounded perspective on what it means to study science deeply, the choices that shaped his path, and what lies ahead. Join us as we chat about lab life, learning curves, and the joy of doing what you love. Hi, Parth. What's up? How are you doing? Fine. What are you doing? I'm doing great and I'm all charged up for today's discussion. So, are you Yeah. ready for Shastrarth? Yes. Excited. Okay. So the way we will be proceeding is that I will ask you a bit of a heavy question in the beginning, just to set the tone of the interview, and then we will gradually move on to the other topics that we have to discuss. Okay. So my first question is, what does research mean to you? So every child's initial dream job is includes astronaut, musician, teacher, athlete, and one of them happens to be scientist. Since childhood, uh, मुझे रिसर्च में ही जाना था, साइंटिस्ट ही बनना था. एंड बहुत कम लोगों को चांस मिलता है कि दे परस्यू देयर फ्यूचर their childhood dream, and I happen to be one of them. So research means a lot to me. It's कैसे बताया, like it's my passion. Uh, लोग ज्यादातर इंजीनियरिंग या मेडिसिन में शिफ्ट हो जाते हैं आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, बट मैं अपना पैशन फॉलो किया. आई जस्ट या came to the research field because I wanted to be a scientist. Yeah. So research equals to passion in your uh, for your in your dictionary. Okay. Yeah. So as you said, ki, everyone has ambitions when they as they grow up. Everyone wants to be बड़े होके क्या बनना है. This question is asked to a lot of young children. So was there a particular point in your life when you knew that you wanted to study science? And can you describe that for us? ओके सो साइंस तो मुझे बचपन से ही पसंद था. दैट टाइम इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इसका डिफरेंस पता नहीं था. As I grew up, I got to know the difference, and research में इंटरेस्ट था, but I did not know the path. इंजीनियरिंग का तो सबको पता है, जेईई, सीईटी, दिस दैट, so many entrance exams. But research का like there was no defined path because it's not that famous or promoted. बचपन से कंप्यूटर साइंस पसंद नहीं था, तो रिसर्च ही मेरे को मतलब मेरा गोल था. Then turning point in my life where I chose decided कि हाँ अभी research ही करूँगा, and I got to know about the process was the quiz that was, I represented Singhania School quiz में IIM का, which was conducted in BARC Trombay. IIM is Indian Institute of Metals. तो उसका quiz था, and I met many scientists there, and talking to those scientists मुझे एक डायरेक्शन मिला कैसे करना है, आईआईटी के बारे में पता चला. And then I researched a bit myself a bit more about. So वहां से मुझे पता चला. So thanks to Singhania, I got to know and focused myself to research. So, this is very. This, can you tell us more about the IIT exam? Maybe this will be very helpful for the students who are going to join ISC now. IAT exam is basically चारों subjects रहेंगे, PCMB, but it's not that hard to crack. PCM students also have good ranks without bio as well, and थोड़ा बहुत बायो पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा. पोर्शन 12th का बायो है, बट द लेवल ऑफ बायो इज 10th का, सो इवन अच्छा खासा कर सकते हो. फॉर पीसीबी स्टूडेंट्स एज वेल, मैथ्स
might be tough, but scoring is not that difficult. पॉसिबल है, बट प्रैक्टिस लगेगा मैथ का. So, uh, as I am in 12th now, and I think one of the biggest challenges that science students, especially in 11th and 12th grade, face uh, is to cope with the school curriculum in addition to preparing for entrance exams like JEE and CET. So, having been a student of ISC, did you follow any specific study schedules or routines which helped you balance these two uh, different facets of learning? ओके, सो ऑनेस्ट ओपिनियन, आईआईटी बॉम्बे सीएस करना है तो आईएससी इज नॉट द पाथ. वहां जाने के लिए यू विल हैव टू पुट ईच एंड एवरी ounce of your strength into JEE advanced. You cannot spare a little bit of time as well for boards का मतलब whatever lab work is there in school and all. But if you are not in for CS, दूसरा कुछ करना है apart from CS, and you are fine with other fields in engineering as well in IIT में, then ISC is a good choice because uh, one thing is that the ISC में जो पढ़ाते हैं, it's the same as what we study for boards as well, for JEE as well, and all other exams. एक आध दो चैप्टर ऊपर नीचे होता है पोर्शन कट्स के कारण, but otherwise it's the same. बिकॉज द चैप्टर्स आर सेम. प्रैक्टिस सिर्फ तुम लोग को एमसीक्यूज की लगेगी. द पीवाईक्यूज सॉल्विंग इज द बेस्ट वे टू गेट थ्रू इट. एंड ISC is something you'll also have. ब्रो रुक जा भाई, मेरा आवाज गया है. कैन यू पॉज दिस? Uh, Being in 12th, I think one of the biggest challenges that science students, especially in 11th and 12th, face is to cope with the school curriculum as well as to prepare for your entrance exams like JEE or CET. So, having been a student of ISC, did you follow any specific study schedules or routines which helped you to balance these two different facets of learning? ओके, सो एन ऑनेस्ट ओपिनियन वुड बी IIT बॉम्बे CS चाहिए तो ISC मत लो. बिकॉज the dedication required to get into IIT Bombay CS is you won't get it through ISC क्योंकि lab work and all रहता है ISC में. It's very tough to get there. Even with dummy school वहाँ पहुँचना almost impossible है. But ISC is not the best efficient way. अब if you want to do some other degree in other stream, so ISC is a decent choice because ISC में what you study is what is asked in JEE. The chapters are same, the topics are same. पोर्शन इधर उधर हुआ उतना एक्स्ट्रा पोर्शन सेल्फ स्टडी से हो जाएगा. ज्यादा कुछ इसका प्रॉब्लम ये क्योंकि मेन चैप्टर्स आर नॉट कट. सेल्फ स्टडी कॉन्सेप्ट्स से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सेल्फ स्टडी से हो जाएगा दो एक्स्ट्रा चैप्टर्स का. बाकी फॉर क्या बोलते हैं अपना एंट्रेंस के लिए पीवाईक्यू सॉल्विंग इज अ मस्ट. फॉर बोर्ड्स एज वेल पीवाईक्यूज, बट प्रेफरेबली वो जेई के जैन अटेम्प्ट के बाद किया तो बेटर होगा. बट हाँ, अब आई माई सेल्फ क्या बोलते आईएससी इतना भी टफ नहीं होता है. बिकॉज कैन यू पॉज? आई लिटरली लॉस्ट दैट. ओके, सो आईआईटी इज पॉसिबल. मेरे कुछ दोस्त है आईएससी करके जो आईआईटी मद्रास में कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग.
तो इट्स नॉट दैट पॉसिबल नहीं है। बस प्रैक्टिस चाहिए पीवाई क्यूज का in for JE and JE entrance exams as well as for boards. Now coming to my schedule, मेरा रूटीन क्या था? एज सच तो कुछ था नहीं। 11th में ज्यादातर तो आई वाज नॉट फोकसिंग ऑन एंट्रेंस एग्जाम्स। आई वाज गोल एंट्रेंस एग्जाम ही था, बट आई वाज इनटू स्पोर्ट्स, नेशनल वगैरह गया हूँ, तो मेरा वहाँ फोकस था तभी। अलग से लाइक हार्डकोर प्रिपरेशन मेरा एंट्रेंस का तभी नहीं था, थोड़ा बहुत इट वाज देयर, राइट? So after that, 12th में I got a bit more focused, and but still routine and all तो मैं follow कभी किया हूँ नहीं, को बनाया भी नहीं हूँ। Whatever I did was PYQ solving for entrance exams as well as for boards, mainly for entrance। जब entrance का for पहले था जान अटेम्प्ट, तो सब्जेक्ट टॉपिक एंड वो सब मैं स्कूल एंड क्लासेस में क्या चलता था उसके डिपेंडिंग, एंड डिपेंडिंग ऑन माय मूड आई यूज्ड टू चूज व्हाट पीवाईक्यूज आई सॉल्व। द ओनली थिंग दैट वाज फिक्स्ड या रूटीन में जो था वो वाज दैट वाज अटेंडिंग ईच एंड एवरी लेक्चर इन स्कूल एज वेल एज इन क्लास। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मेरा उधर हो गया 70%। जो हमारा लर्निंग होता है वो मेरा मैं स्कूल में ही निपटा देता था, स्कूल एंड क्लास। लाइक स्कूल यूज्ड टू बी माय फर्स्ट लेक्चर एंड क्लास वाज रिफ्रेशमेंट या वैसे वर्सा। तो वैसे मेरा डबल रिवीजन हो जाता था, फिर घर पे मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता था, ओनली पीवाईक्यूज, एंड वो भी मूड पे। तो मेंस का तो ऐसे हुआ, एंड ऑल द अदर एग्जाम्स फॉर एडवांस यूट्यूब से मतलब हाई ऑर्डर कॉन्सेप्ट्स करने के लिए यूट्यूब से हेल्प लिया। इट डजेंट मैटर विच चैनल, सब चैनल में अच्छा पढ़ाते, कोई टॉपिक एक चैनल में अच्छा तो कोई दूसरे में, पीडब्ल्यू हो या एड्यूनिटी हो या जो भी हो, एवरी चैनल इज गुड, वहां से पढ़ो, फ्री में है सब। देन दैट्स इट आई गेस। So the एग्जाम crux of the पैटर्न matter is, इज द ओनली डिफरेंस आई गेस। एंट्रेंस में एमसीक्यू करना होता है एंड बोर्ड्स में लेंथी आंसर्स लिखने होते हैं। या आईएससी देयर इज वन एडवांटेज अबव अदर बोर्ड्स के, एंड तुम लोग का वो दूसरे बोर्ड्स में यू विल हैव लेंदी आंसर्स, बट आईएससी में तुम छोटा भी लिखोगे यू विल गेट डिसेंट मार्क्स। सो ऐसे केसेस भी हुए हैं मेरे। आई नो वन पर्सन जिसका बिट्स पिलानी में सीएस मिल रहा था। इट्स नॉट एन इजी जॉब टू गेट देयर, बट इन बोर्ड्स board requirement for bits is 75%. That guy got 74.8 or something like that. तो एक दो मार्क्स के लिए he missed out the CS। लाइक लोगों को जो नहीं मिलता है उसको मिल रहा था, ओनली बिकॉज ऑफ बोर्ड्स ही कुड नॉट गेट दैट। सो इट्स कैसा होता है कि उसका पूरा बिट्स ही चले गया, तुम लोग का बिट्स का रैंक थोड़ा कम आया, तो भी एटलीस्ट यू आर गेटिंग बिट्स। या दैट्स द थिंग। तो कोचिंग में वो एक इशू आता है कि बोर्ड का प्रिपरेशन नहीं होता है अच्छे से। इफ यू कैन डू दैट इट्स ग्रेट। अब कोचिंग वाले थोड़ा ये बोलते हैं कि दैट्स द ओनली वे, बट दैट्स नॉट द रियलिटी। आईएससी का अगर बोर्ड्स का पढ़ोगे इट्स इक्विवेलेंट टू स्टडीइंग फॉर जेई मेंस। सो या। so the crux of the matter is clearing or your concepts when you are taught the chapter, right? So that is या very important. That is when most of the learning happens. Okay. Now we'll move on to the next question.